सर, हर साल देश का आम आदमी जब वित्त मंत्री जी की बजट की स्पीच सुनता है तो वो इसलिए नहीं सुनता कि पीएलआई की क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कौन सा कॉरिडोर बन रहा है। देश का आम आदमी, सैलरीड क्लास, इसलिए बजट की स्पीच सुनता है कि उसके अंदर स्लैब में कोई रिवीजन होगा, क्या हमारी स्टैंडर्ड डिडक्शन की जो हमें डिडक्शन मिलती है वो बढ़ेगी। लेकिन इस बार बजट में देश का आम आदमी और खास तौर पे देश का मिडिल क्लास डिसअपॉइंट हुआ। पहले ही देयर हैज बीन अ स्टैग्नेशन इन द सैलरीज, इन्फ्लेशन 6.8% पे खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद हमने इस बार कोई स्लैब में या स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज नहीं देखा। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इसी बजट में अनाउंसमेंट करें कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपए उसे बढ़ाकर सैलरीड क्लास के लिए 1.5 लाख रुपए किया जाए। सर, थर्ड प्रॉब्लम दैट वाज देयर विद द बजट इज दैट देयर वाज नो रिलीफ फॉर द मिडिल क्लास। सर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन इंडियाज हिस्ट्री, द पर्सनल इनकम टैक्स collection was more than the corporate income tax collection। यानी कि इंडिविजुअल्स ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 11 लाख करोड़ के आसपास भरा, और कंपनियों ने, कॉर्पोरेट ने जो इनकम टैक्स भरा वो लगभग 9.8 लाख करोड़। यानी कि मैक्सिमम टैक्स आपको इंडिविजुअल्स के इनकम टैक्स से मिल रहा है, आप मिडिल क्लास वो टैक्स भर रहा है। आज वो दौर आ गया है कि हम मिडिल क्लास को अपलिफ्ट करें, मिडिल क्लास को पैम्पर करें, नहीं तो मिडिल क्लास एक सैंडविच की तरह रिच क्लास और पुअर क्लास में दबता चला जा रहा है। सर, राइजिंग कॉस्ट प्रेशर्स के चलते पिछले वित्तीय वर्ष में मिडिल क्लास ने देखा कि उसके एजुकेशन के खर्चे में 8% की बढ़ोतरी हुई, हेल्थ केयर 9% से महंगा हुआ, रेंट 7% से, फूड 6% से, ट्रांसपोर्ट 5% से। मेरा रिक्वेस्ट यह है माननीय फाइनेंस मिनिस्टर से कि वो इनकम टैक्स में रियायत देकर या तो मिडिल क्लास को कोई रिलीफ दें, और अगर इनकम टैक्स में रियायत नहीं दे सकती हैं तो उसकी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पे उसको बेनिफिट दें, उसे इंसेंटिव्स दें कि वो ज्यादा बचत करे, ज्यादा वेल्थ क्रिएशन कर पाए। Also, sir, the point that the middle class is being sandwiched was raised. I'm sure many honorable members thought they had some common cause with that allegation which was being made. I want to very clearly bring the data out to say the conclusion that the middle class was being sandwiched was being made because personal income tax collections exceeded the corporate tax. That is fundamentally misdiagnosing the situation. There's no evidence of middle class suppression. Actually, there is enough and more evidence of historic middle class expansion and formalization driven by the economic reforms that have been undertaken in the last 10 years. High personal income tax collection is not necessarily middle class being crushed. I'll give you the reasons why. There are more people today with income that is taxable. More income is visible and in the formal sector, and it is being reported. So the economy is no longer narrow, and it's not just confined to the elite. Middle class basket is widening. Between 2013-14 and 24-25, the number of taxpayers, that is, people filing returns or with TDS deducted, rose from 5.26 crore to 12.13 crores. So within the last 11 years, more than doubling has happened in the income taxpayers' numbers. So obviously you learn more from it. And what is the growth therefore, sir? CAGR of 7.9%. So that is the largest structural expansion of the middle class in this country. So suppression cannot happen if the tax net is widening, and if the net itself is widening, it's not because of suppression. People are coming on board to pay. And coming on board to pay, not because we are bringing more rates. On the contrary, even as this expansion is happening, income tax limit has increased to 12 lakhs for everybody, and for those in salaried class, 12.75 lakhs तक आपको टैक्स पे करना ही नहीं है। सो सप्रेशन का बात कहाँ आती है सर? अगर 12.76 लाख तक सैलरीड क्लास को टैक्स ही पे करना नहीं है, कहाँ है सप्रेशन? सेकेंड, स्टैंडर्ड डिडक्शन हैज ऑल्सो बीन एनहांस्ड. New
tax regime has simplified filing and due diligence करने वाले काम को भी simplify कर दिया. Next generation GST rationalization has also lowered household costs. उनके monthly खर्च कम हो रही है क्योंकि GST में हर item का rate कम हो गया है. Inflation also is at a historical low. So, somewhere middle class के ऊपर ये शब्द suppressed cannot coexist with real incomes rising and with record low inflation. And there is a upward mobility of workforce as well. So, ये थोड़ा मुझे समझने के लिए फैक्ट रख रही हूँ सर. So I move to Honorable Member Wilson. He said, rising debt again, itna debt, it's not good. So I just want to highlight the fact, sir. The principle is one, we have to take care of reducing debt, whichever be center or state or everybody. And in this, not a member of this house, but with your indulgence, I like to quote the former Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi Palaniswamy Avargal. He said, and I quote, for 73 years, successive governments in Tamil Nadu accumulated roughly 5 lakh crores in total debt. 73 years it took 5 lakh crores to be accumulated. But in just 4 years under the DMK government, since 2021, 4.56 lakh crores have been added to this pile. 73 வருஷத்துல பண்ண அந்த அமௌண்ட்டை 4 வருஷத்துல பண்ண கணத்தை இவங்களுக்கு